वेलकम यू ऑल। लास्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्कस किया एंड वी हैव कैलकुलेटेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r square. That electric field due to dipole due to point charge varies as square of distance, and that is proportional to the square of area. So with the variation of the distance from the point charge, the electric field varies. And we have also represented graphically. Today we will be discussing electric dipole moment and field due to electric dipole moment, electric field. As in my first lecture, I have discussed that in case of electrostatics, we are just in electrostatics we learn how to calculate the electric field due to stationary charges, and in Coulomb's law, we calculate the force between the two charges, and by using the Coulomb's law, later we calculate the electric field due to point charge. Now we have a suppose, and now we have to have two charges, equal and opposite charges, forming a dipole. How to calculate the electric field due to that dipole? And before discussing that, let us discuss about the main mechanism behind the electric field. Say if there is a plus q charge, we cannot visualize the electric field. The field lines early denoted as lines of forces. पहले उन्हें lines of electric lines of forces कहते थे, electric lines of forces. now उनका नाम change होके electric field lines कर गया, electric field lines. ये concept फैराडे ने दिया, माइकल फैराडे. उन्होंने ये concept दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने में हमें फील्ड लाइंस काफी मदद करती है, जिन्हें हम अर्ली में लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते थे, लेकिन आज ये नाम चेंज होके फील्ड लाइंस बोलते हैं. तो जो भी कोई भी चार्ज है, सपोज है पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, तो फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इन ऑल डायरेक्शंस और ऑल साइड्स में, यानी कि हर एक दिशा में फील्ड लाइन जाती है, यानी कि वो एक स्फीयर टाइप बनाती है, यहाँ से भी जाती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, हर एक साइड से जो फील्ड लाइन जाती है. These field lines helps us to visualize the electric field at any point. Suppose I have checked the electric field at this very point, then I will surely calculate the electric field at this point, and this is because of the field lines and the variation of the field lines, because you see यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वेरिएशन है, यहाँ पे ये नजदीक है. जितने ये फील्ड लाइंस आपस में नजदीक होंगे, जितने ये फील्ड लाइंस आपस में नजदीक होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी. The more they are closely to one another, the more field lines are closely to one another, the more strong electric field is there. So as soon as we go away from the charge, the density of field lines varies. You see, as I have discussed earlier, there are three field lines in this much of area, and here are three field lines in this much of area. So यहाँ field lines की spacing है वो बहुत कम है, closely spaced field lines. तो यहाँ पे जो electric field density होगी, electric field intensity होगी, वो ज़्यादा होगी as compared to this very area. So as soon as we go away, the field lines, as we go away from the charge, the intensity of field line varies. And in case of positive charge, the field lines move away from the charge, as shown in the direction given by this arrow. The field lines जो है वो बाहर की तरफ जाती है, and they are equally spaced. They are close spaced near the charge. That's why near the charge, the field, electric field is very strong. As we go away, the field lines are separated. More and more separation takes place between the field lines. More and more separation takes place between field lines. The electric field will be varying with R. There is electric field will be decreasing when we go away from the charge, and hence, in case of positive charge, the field lines are moving outside the charge. Second point, this is another property, and second property is property of these field lines, they do not intersect with one another. They do not intersect with one another. First property, field lines helps us to visualize the electric field, and at any point we can calculate the electric field. Second point, their density shows us the strength of the field. Suppose if I have an electric field like this,
यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर है लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइंस नजदीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, बिकॉज यहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा दूर है, ये फील्ड दो लाइन है ना वो दूर है काफी, यहाँ पे फील्ड लाइन नजदीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। जितना इनको हम नजदीक करेंगे, यहाँ पे जितना मैं नजदीक करूंगा फील्ड लाइंस को, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई सी, so the electric field at C will be greater than electric field at A, and electric field A will be greater than electric field at B. So depending on the lines, how much they are closely to one another, how much they are close to one another, also indicates the strength of electric field. And in case of positive charge, you know the field lines are moving away. The field lines, second property, field lines, in case of positive charge, move away. And third, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक, हाउ टू चेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट ड्रा द टेंजेंट on the field lines gives the direction of electric field. Tangent on the field lines gives the direction of electric field. This is another property of field lines. So there are so many properties that you can study. The properties of field lines, they do not intersect one another. They are closely spaced. Then field strength is very strong. As you move away from the charge, the field lines are separated. Not that much strength. And the tangent on the electric field gives the direction of the electric field. And tangent on the field lines, if you have assigned, suppose a field line like this, just draw a tangent on this very field line, you get the direction of the electric field. So in case of now, and you have studied here, the close spaced, जो field lines है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो electric field strong होगा यहाँ पे as compared to this one, as compared to this one. तो इसी तरह से अगर हमारे पास negative charge होगा, in case of negative charge, the field lines are inverse. So you can have, in case of negative charge, negative Q, you have inverse field lines. अगर यहाँ पे मैं एक और नेगेटिव रखता हूँ, तो नेगेटिव क्यों, तो यहाँ से अगर फील्ड लाइन आएगी तो फिर यहाँ की तरफ जाएगी, और यहाँ से जो होगी यहाँ की तरफ जाएगी, तो फील्ड लाइन यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे फिर यहाँ पे जाएगी। ये पूरी साइड से आ रही होती है, सफरिकली आती होती है, और यहाँ पे फील्ड लाइन यहाँ की तरफ जाएगी, जिसका स्ट्रेंथ होगा उसको खींचेगा, तो इस स्टेज पे कोई फोर्स नहीं होगा, ना इसका ना इसका, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा, बिकॉज फील्ड लाइंस विल बी टुवर्ड्स दिस एंड हियर फील्ड लाइंस विल बी टुवर्ड्स दिस, तो यहाँ पे रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में। और इनके साथ नेगेटिव चार्ज, सो यू कैन राइट इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर इनवर्ड्स और टुवर्ड्स द चार्ज क्यू। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द चार्ज क्यू है फील्ड लाइंस, और पॉजिटिव में हमारे पास आउटवर्ड्स होता था। तो यहाँ पे फील्ड लाइन जो है यहाँ की आगे, दिस कॉल्ड फील्ड मैप, इसको हम फील्ड मैप कहते हैं। ड्रा द फील्ड मैप फॉर नेगेटिव टू चार्जेस, यू कैन ड्रा दिस फील्ड मैप, यहाँ से चार्ज आएगी यहाँ की तरफ चार्ज आएगा, यहाँ से फील्ड लाइन आएगी यहाँ की तरफ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी यहाँ की तरफ जाएगी, बीच में कोई फील्ड लाइन है, यहाँ पे आप कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करोगे, यानी कि ये रिपल्शन करेंगे आपसे। सिमिलरली फील्ड मैप फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस, और आपको फील्ड मैप डालना है टू पॉजिटिव चार्ज, सपोज दिस, ये यहाँ की तरफ दे देगा, यहाँ की तरफ, यहाँ से जो भी आ जाएगी वो यहाँ की तरफ आना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो यहाँ की तरफ मूव देगा, यहाँ वाला यहाँ की तरफ मूव करेगा, यहाँ वाला यहाँ की तरफ मूव करेगा, रिजल्ट विल बी द रिपल्शन। There will be no force experienced by the object because यहाँ पे भी repulsion होने की चांसेस है, because both charges are positive. तो field lines are moving like this. अवे यहाँ भी ये एक तरफ फोर्स आएगा तो ये भी यहाँ इन नहीं करेगा, ये भी बाहर धक्का मारेगा, ये भी धक्का मारेगा, field lines will move like this. You have a field map due to two charges. That's why there's a repulsion. So you can write Q1, Q2 greater than 0
You have a repulsion. This also indicates that if minus q1 is one charge, another is minus q2, minus minus becomes plus, so q1, q2 is greater than 0. So this greater than 0 indicates that there's a repulsion. So if q1, q2 is less than 0, then there is repulsion. Now we can say how there's attraction. Sorry, here is repulsion. Attraction means one of the charges is negative, another is positive, q2 plus or minus minus, and is less than 0. So here is attraction. If the product of two charges is greater than 0, then you can say either the both charges are positive or both charges are negative. Whereas in case of the product of two charges is negative, less than 0, then you can say that one of the charges is negative, hence there is attraction. This is a field map for positive charges, and now similarly you can go for the field map for negative charges. Negative and positive charge. Suppose we have two charges, negative and positive. Right? Negative Q charge and another is positive charge. Obviously, the field line will move from go towards this. The field line will move towards this. और यहाँ से field line जो है इन आ जाएगी, सॉरी यहाँ से बाहर जाएगी और यहाँ से इन आ जाएगी, यहाँ से बाहर जाएगी और यहाँ से इन आएगी. यहाँ पे भी इन होगा, यहाँ पे भी इन होगा, हर साइड से इन होगा और यहाँ से हर साइड से बाहर ही होगा. This is a field map for negative and positive charge if they are equal in magnitude, separated by distance, fixed distance. That means the center O, that's a separation, that is a dipole. Di means two, pole means two charges. This is negative pole, this is positive pole. The two charges equal and opposite, separated by some distance, is now a dipole. And the field map for dipole is like this. The negative charge, from positive charge, the field lines are moving towards the negative, and from positive moving towards the negative, from positive moving towards the negative. So if you have A and you have B and you have C, if suppose the charges are moving like this, you are not giving the sign. You see the charges are moving away from A towards B, then A is positive and B is negative. And obviously यहाँ से भी डायरेक्शन फ्रॉम A towards B है, A से निकल रही है, A is positive, B is negative. अगर यहाँ से फिर ऐसे होगा, obviously C भी positive है. You can, from the direction of the field lines, you can check the charges on the A, B, C. So by using the field map, you can also check the charges on the places, on the locations. Like A, B, C पे क्या charges हो सकता है, what are the charges on these locations, by checking the direction of field lines. So at C, the field line is moving away towards B, so B is a negative, and A is positive, C is also positive, and here in this case, minus Q is negative inwards, and from this positive, the field line is moving towards the negative. Here, in case of electrostatics, monopole system exists. Monopole system exists. And dipole system already existing. Here plus Q charge can be separated. There's a plus Q charge that can experience an electric field, or that can create itself an electric field. So monopole charge is possible there, negative Q charge can be there, positive Q charge can be there, and there can be dipole system as well. So this is the dipole system, minus Q charge and plus Q charge. Now the question is, if we have a plus Q charge, then I find the electric field due to these field lines. I just check it, this equal to constant times 1 over r square, Q over r square. So electric field varies as square of distance in case of point charge. Say it could be negative or it could be positive, electric field varies as square of distance in both the cases. But what happens when you have a dipole? How can you find the electric field? Second point, यहाँ पे लूप फॉर्मेशन नहीं होती है. आपका Q से प्लस Q से फील्ड लाइंस आती है नेगेटिव Q तक, लेकिन नेगेटिव Q से वापस नहीं जाती है. प्लस Q से चार्ज आती है माइनस Q तक, ये फील्ड लाइन आती है, लेकिन यहाँ से वापस यहाँ नहीं जाती. अगर यहाँ से यहाँ फील्ड लाइन जाती तो ये एक लूप बनाता. को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल में कोई लूप नहीं बनता है. लूप फॉर्मेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है. नो लूप फॉर्मेशन इज पॉसिबल ड्यू टू फील्ड लाइंस. नो लूप फॉर्मेशन इज पॉसिबल due to field lines.
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे मोनोपोल सिस्टम एग्जिस्ट होता है और यहाँ लूप नहीं बनते हैं, क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ फील्ड लाइन कोई नहीं जाती है, सिर्फ क्यू से माइनस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाता है। सपोज आई फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन, नाउ दे आर फॉर्मिंग अ डाइपोल। अब ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स है, इसकी फील्ड लाइंस इनवर्ड्स है। सपोज आई हैव अ पॉइंट हियर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉइंट चार्ज होता, suppose if it's a point charge, is q and is q naught separated by distance r, you just draw it in a origin. You have to find out the electric field at this point due to this charge. You just calculate the value. Electric field to a point charge E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q but r square. Then you find the direction of electric field. If it is positive, it's outwards. If it is negative, it's inwards. But what about this? It's a dipole, there is a plus q charge and then there is same times minus q charge. And if suppose the point is here, this plus q will have a tendency to push it away, and this minus q have a tendency to push it towards itself. So here are two directions. The electric field will be along this direction, here the electric field will be along this direction. So due to plus q charge, direction will be electric field away from the plus q charge and direction of the E2 will be towards the minus q charge. So here it would have a resultant effect. You have to use the vector laws to calculate the electric field due to dipole, because in dipole you have a plus q charge, you have a minus q charge, and the point where the electric field is supposed to be calculated experiences a resultant effect due to plus q charge and minus q charge. So जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करना होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो चार्ज क्रिएट करेंगे, E1 एक चार्ज और E2 एक चार्ज क्रिएट करेगा, उनका फैक्टर सम करना होता है। इट इज नॉट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज सिंपली आप उसमें इस्तेमाल करते हो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बट इन डाइपोल you have a different directions of the electric field. अगर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो, you have two different directions, and electric field produced by the charge is always added vectorially. So the different directions are here, so you have to use the vector law in order to calculate the total electric field produced by the dipole. And second question, कि dipole का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहां पे आप डायरेक्टली डाइपोल से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। आपको डाइपोल से पहले पॉइंट चार्ज, इसको पॉइंट चार्ज लेके चलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर इसको अलग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना है, फिर उनको वेक्टर ऐड करना है। यानी कि डाइपोल में आप डायरेक्टली कोई भी आपके पास मेथड नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइपोल में आपके पास दो चार्ज हैं, एक को पॉइंट चार्ज समझ के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, फिर उसकी डायरेक्शन देखनी है, फिर दूसरे को पॉइंट चार्ज कंसीडर करके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, फिर उसकी डायरेक्शन देखनी है, फिर उनका वेक्टर सम करके हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू डाइपोल। सो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। वी विल डिस्कस नाउ डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो दो टाइप के आते हैं। सपोज दिस डाइपोल माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज सेंटर ओ। सपोज द टू आर सेपरेटेड बाय ए प्लस क्यू चार्ज equidistance from the center of the dipole. एक और पॉइंट दिमाग में रख लें कि जब भी आप डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको जब आप E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught 1 over r square, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू पॉइंट चार्ज तक, सोर्स चार्ज से लेकर उस पॉइंट चार्ज तक जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ये है सोर्स चार्ज, ये सपोज टेस्ट चार्ज, और ये है आर। जितना ये आर बढ़ेगा टेस्ट से चार्ज उतना दूर जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना वैरी हो जाएगा। ये पॉइंट चार्ज में है। लेकिन डाइपोल में आपका प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, तो आप डिस्टेंस जो है वो ये आर जो है वो आप सेंटर ऑफ डाइपोल से कंसीडर करते हैं। आप इसकी डिस्टेंस या इसकी डिस्टेंस अलग नहीं लेते हैं। इसकी डिस्टेंस यहाँ पे, अगर मेरे पॉइंट यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस इतनी है तो इसकी डिस्टेंस इतनी है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं, हमने कहा था वो शेल थ्योरम में एज इफेक्ट इज द टोटल इफेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। तो यहाँ पे भी हम सेंटर को ही कंसीडर करते हैं शेल थ्योरम के हिसाब से कि हम सेंटर से इफेक्ट स्टडी करते हैं। तो डिस्टेंस इन केस ऑफ
कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये आपको जरूरी याद रखना है कि सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस लेनी होती है। सो नाउ दिस इज अ डाइपोल minus q plus q separated by this charge. Dipole is the simply two charges, two opposite charges of equal magnitude separated by some distance. Both must be equidistant from the center. So dipole moment P is equal to the product of separation is 2a, a and a, 2a, the product of separation between the two charges and the magnitude of either charge, because both the charges have equal magnitude, and the product of the separation between the two charges and the product of separation between the two charges into q magnitude of the either charge, one of the charge ka magnitude, that gives dipole moment is a vector quantity. Its SI unit is A, its Q is coulomb meter. Coulomb meter is the SI unit of electric dipole moment. Electric dipole moment. So electric dipole moment is known by P. It's a vector quantity. It is equal to the product of separation between the two charge. Product is multiplication of product of separation between the two charge and the magnitude of either charge. And its SI unit is centimeter, is coulomb meter. So now the dipole. Suppose मुझे यहाँ पे इफेक्ट देना है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल से, मुझे यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये हर साइड से फील्ड दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, हर एक पॉइंट से देखना है, मुझे इस पॉइंट पे भी देखना है, इस पॉइंट पे देखना है. Then consider distance this r, this r, this r, because I've told you the distance taken from the center. This r here, this is r, and this point is r. So you have to calculate the electric field at various points. Now for simplicity, जो दो क्वेश्चंस बताए गए हैं आपको, to find the electric field on a horizontal line and a vertical line. डाइपोल के हॉरिजॉन्टल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो और वर्टिकल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो. हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज दिस इज माइनस क्यू चार्ज A, this is plus q charge. यहाँ पे देख लो on the axis of this dipole, horizontal line पे, it's called axial line. On the axis of line पे डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ऑल हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो भी बता रहा था, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन आपको एक स्पेशल केसेस दिए गए हैं कि आपको यहाँ पे देखना है. इसका एक जनरल फॉर्मूला भी क्रिएट करनी है, बाद में आप इसके ये भी देखा जाएगा कि यहाँ पे देख लो वर्टिकल पॉइंट पे, कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन. सपोज ये भी डिस्टेंस r है यहाँ से सेंटर से, ये O है, दिस इज A, और ये भी सेंटर से r है. To find the electric field at this point is called electric field due to dipole on axial line. To find the electric field at this point is the electric field due to dipole on equatorial line. यानी कि यहाँ पे अब ये पॉइंट ना एंगल चेंज कर रहा है, ये पहले 0 एंगल पे है, फिर 30, 45, 60, 90, इस तरह यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जाए, पूरी हर जगह पे ये होगा. और आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्म तैयार करनी है. लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ दो केसेस है, वन ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज, जो एक्सिस बनाएंगे एक्सियल लाइन पे, और वन इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी कि वर्टिकल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. नाउ लेट अस सपोज वी विल कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट कॉल्ड एक्सियल लाइन, दूसरा क्या है इक्वेटोरियल लाइन. नाउ वी डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल on axial line, which is at a distance r from the center of dipole. The point P where the electric field is to be determined is at a distance r from the center of the dipole, because मैंने कहा था कि dipole से हम distance जो लेते हैं वो center of dipole से लेते हैं. और मैंने ये भी कहा कि यहाँ हम electric field due to this charge से कैलकुलेट करेंगे, फिर electric field due to this charge से कैलकुलेट करेंगे. डायरेक्ट मेथड है ही नहीं डाइपोल के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इंडिविजुअली, यानी कि पॉइंट चार्ज फॉर्मूला इस्तेमाल करके, यहाँ पे भी पॉइंट फॉर चार्ज इस्तेमाल करके, फिर हम उनका वेक्टर सम करेंगे. हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उनका वेक्टर सम करके हम डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं एट दिस पॉइंट. नाउ दिस नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन. लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole on axial line. Suppose two charges minus q at a center from distance a from the center, and plus q same distance from the center of dipole
this point A, this point P. Let AB be the dipole, let O be the center. The minus Q charge located at A is at a distance A, minus plus B charge located at point B at a distance A from the center. Let P be the point where the electric field is supposed to be determined, and let this P is at a distance, say X or R, from the center of dipole, because we are considering during the dipole the distance from the center of dipole. But the point charge, we take the distance from the source charge to test charge. इनके साथ अगर मैं ये पॉइंट चार्ज लेता हूं तो ये टेस्ट चार्ज है, फिर ये डिस्टेंस आएगी यहां से यहां तक. अगर मैं ये पॉइंट चार्ज मानता हूं सोर्स चार्ज, फिर इतनी डिस्टेंस आ जाएगी. अगर मैं डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड मानता हूं टोटल, वो डिस्टेंस यहां से आ जाएगी. तो पहले मुझे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, फिर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, फिर उनका वेक्टर सम करूंगा. क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं रिपीट भी कर रहा हूं, डाइपोल का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है. आपको पॉइंट चार्ज वाला ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके डाइपोल में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. Suppose at point A, E1 is the electric field, and at point B, E2 is the electric field. E1 is the electric field due to negative Q charge at point A, and E2 is the electric field due to plus Q charge at point B. Simple. प्लस क्यू जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, दैट विल मूव दिस पॉइंट अवे. वो इस पॉइंट को बाहर धक्का मारेगा, क्योंकि प्लस क्यू की जो फील्ड लाइंस है वो पुश करती है. दैट विल पुश पी अवे फ्रॉम द प्लस क्यू. सो द E2 की डायरेक्शन जो होगी वो इस दिशा में होगी, और E1 जो है वो नेगेटिव है, माइनस है, तो उसका जो फील्ड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्ड्स होगा टुवर्ड्स क्यू. सो द E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो E1 की डायरेक्शन जो होगी इस डायरेक्शन में होगी. यहां तो मुझे वेक्टर क्वांटिटी बनाना है, लेकिन यहां डायरेक्शन इस साइड में होगी, इस साइड. यानी कि डाइपोल माइनस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी E1 की, और प्लस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी. माइनस क्यू की डायरेक्शन ऐसे होगी, प्लस क्यू की डायरेक्शन इस साइड होगी. अगर ये दोनों बराबर हुए तो नेट इफेक्ट जीरो होगा. लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है? अब देखें, जब मैं ई क्यू से डिस्टेंस ट्रांसफर करूंगा इस पॉइंट पी तक तो इतनी ही डिस्टेंस है, लेकिन जब मैं E1 से यानी कि पॉइंट क्यू चार्ज से डिस्टेंस ट्रांसफर करूंगा तो इतनी सारी डिस्टेंस है. और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज वेरीज एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. यहां तो मैं इसको पॉइंट चार्ज से कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्लस क्यू से अलग इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, माइनस क्यू से अलग ले रहा हूं, फिर उनका वेक्टर सम करूंगा. लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो फिर इफेक्ट जीरो होगा. लेकिन जब मैं डिस्टेंस के हिसाब से देख रहा हूं तो क्यू काफी ज्यादा दूर है, माइनस क्यू से पी काफी ज्यादा दूर है, प्लस क्यू से कम है. और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. यहां प्लस क्यू की वजह से जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. इसका मतलब है जब डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जब डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस कम है, तो प्लस क्यू यानी कि E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन होगा E1 से, क्योंकि E1 में डिस्टेंस ज्यादा है. अगर ये बराबर होते तो इफेक्ट जीरो होता, लेकिन E2 का इफेक्ट ज्यादा है एट पॉइंट P देन E1 से, क्योंकि E1 काफी दूर है, इतनी सारी डिस्टेंस है, और E1 से इतनी डिस्टेंस है. तो इट इंडिकेट्स अगर आपके पास दो वेक्टर काम कर रहे हैं, E1 यहां की तरफ कर रहा है काम और E2 यहां की तरफ कर रहा है काम, लेकिन कंडीशन एग्जिस्ट हो रही है E2 ग्रेटर देन E1 से है, तो दिस इंप्लाइज जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, सपोज अगर E1 10 है न्यूटन है, सपोज फोर्स में एग्जांपल दे रहा हूं, और E2 20 है, E2 20 है, E1 10 है, तो इफेक्ट जो होगा वो E2 माइनस E1 दैट्स बी 20 माइनस 10, रिजल्टेंट 10 होगा. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ E2 माइनस E1.
और उसकी डायरेक्शन E2 ग्रेटर देन इस तरह होगी और दैट विल बी रिटन एज, सो E2 विल बी द टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E2 minus E1. So mod of E is equal to mod of E2 minus mod of E1. Now, when you substitute E1 and E2, how to find the E1? Now to calculate E1, हमें E1 calculate करना है. E1 is equal to 1 over 4 pi electric field due to minus Q charge 4 pi Q बटा R. और मैंने R कहा था आपको, R is here we are taking the point charge. So R is यहां से पहले यहां चलना है, फिर यहां से यहां चलना है. ओरिजिन से यहां तक R है, फिर यहां से यहां तक A है. वो माइनस क्यू से यहां तक P तक जो डिस्टेंस है, माइनस क्यू से P तक जो डिस्टेंस है वो है A प्लस R. सो E इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught divided by Q बटा R स्क्वायर. इंस्टेड ऑफ R स्क्वायर ये है A प्लस R स्क्वायर, या आप R प्लस A स्क्वायर लिखें. Similarly, E2 will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q बटा डिस्टेंस स्क्वायर. Q तो आपका है, डिस्टेंस स्क्वायर इज ये वाली डिस्टेंस, लेकिन ये कहीं हमारे पास का नंबरिंग नहीं है. हम ये कह सकते हैं कि R ओरिजिन से R है, लेकिन Q से यहां तक A है. हम इस R से A काटेंगे, तो अगर ये R इतना है, यहां तक इतना A, तो हमें ये वाला पोर्शन बच गया. सपोज आपके पास BP है, you can write AP, sorry, OP minus OP minus OB gives BP. OP is R minus OB is A, BP is R. BP R minus A, this gives us BP. So your distance from plus Q charge comes out to be BP, that's R minus A square. R minus A square. Obviously यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ऐड है, यहाँ डिस्टेंस कम है, ये ज्यादा होगा. E1 का इफेक्ट है, E2 का इफेक्ट E1 से ज्यादा होगा. You have this condition. So on substituting in this, you get total electric field. क्योंकि मैंने कहा अब मैंने इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इस पॉइंट चार्ज से निकाला, मैंने अपने वेक्टर सम किया. वेक्टर सम इनको सब्ट्रैक्शन हुई क्योंकि एक बड़ा है. इफ यू आर टू वेक्टर्स A and B, A is greater than B, then vector sum is A minus B. So अब वेक्टर सम करें यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E2 minus E1, that is E2 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by R minus A square plus 1 over 4 pi epsilon naught Q over R plus A square. This is the equation you get. Now on calculating further, we will get the electric field. It's now calculated further. You get E is equal to, यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा Q के साथ, Q over 4 pi epsilon naught, नीचे बचेगा 1 over R minus A square plus 1 over R plus A square. The total calculation, after calculating it further, is very simple now. You can make calculation easy. E is equal to Q over 4 pi epsilon naught R plus A square minus R minus A square divided by A minus B into A plus B, that's A square minus B square whole square. ये स्क्वायर अपना ही है दोनों का, और अंदर फॉर्मूला A minus B into A plus B. A minus B into A plus B is equal to A square minus B square. Now E is equal to Q over 4 pi epsilon naught, this A plus B whole square, A square plus B square plus 2AB 2AR. This minus now, A square minus becomes R square plus B square minus B square minus A square plus minus 2AB, that minus with this minus plus 2AB is 2AR divided by R square minus A square
whole square. Can use the formula, you can break it, r plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, then minus आपका बाहर है a square plus b square minus 2ab, लेकिन मैंने माइनस मल्टीपल कर दिया, माइनस r square minus a square minus 2ab plus 2ab बन जाएगा. So e will be equal to q over 4 pi epsilon r square a square cancel 2ar 4ar divided by r square minus a square whole square. And I can write it. E is equal to, यहाँ पे मैं 2 बाहर निकालता हूँ, 2 यहाँ ये रखूंगा 2a के साथ 2a क्यूब इनटू यहाँ पे r होगा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r square minus a square whole square. This portion is product of separation between the two charge and the magnitude of either charge. This E comes out to be equal to, this is equal to P, it's 2PR divided by 4 pi epsilon naught R square minus A square whole square. This is the expression for the electric field due to dipole. This is the only expression because P is equal to 2AQ electric dipole moment that we had discussed early. So the expression for the electric field due to dipole is equal to this. In vector form, you can write E is equal to 2PR divided by 4 pi epsilon naught R square minus A square. अगर मैंने कहा ये x एक्सिस से जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल रहा हूँ, then along the x axis तो यहाँ पे वेक्टर I आ जाएगा. यूनिट वेक्टर along the x axis, एक्सियल लाइन मैंने x axis पे, अगर मैं x axis मान रहा हूँ, ये मैंने x axis पे रखा, अगर मैं y axis पे रखूंगा तो फिर यहाँ पे j आएगा, अगर मैं इसको z axis पे रखूंगा तो यहाँ पे फिर k आ जाएगा. तो यहाँ पे हम जनरलाइजेशन के लिए r कैप मल्टीपल करते हैं यूनिट वेक्टर. So this is the vector form of this vector representation of electric field due to dipole. So P is a vector quantity. You can write now P is a vector quantity because electric dipole moment is a vector quantity. So your E is equal to P dot R divided by 4 pi epsilon R. This is electric field due to, now it is after the summation between the two, between the electric field due to point charge. हमने सम किया हमको वेक्टर सम. Now it is no more the electric field due to point charge, electric field due to dipole. So electric field due to dipole comes out to be equal to 2PR divided by 4 pi epsilon naught R square minus A square. Suppose अगर ये पॉइंट जितना भी हम दूर ले जा रहे हैं, ऑब्वियसली आप जानते हो कि जितना दूर ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम हो जाएगा. सपोज ये डाइपोल बहुत नजदीक है, हम A को नेग्लिजिबल मान रहे हैं R से. सपोज इफ A is very very less than R, if very very less than R, then A becomes negligible, equivalent to 0. So you can write E is equal to 2PR divided by 4 pi epsilon naught. क्या है, A 0 बन जाएगा जिसमें R is power 4. तो एक R और एक R cancel, then E is equal to 2P divided by 4 pi epsilon naught R cube. So this you get equation. The electric field is constant, this is constant, this is constant, inversely proportional to R cube. So you calculated that in case of point charge, the electric field varies as square of distance, while in case of dipole, electric dipole, the electric field varies as cube of distance. So that indicates also by changing the number of charges or by changing different bodies, your body will have different value for electric field. So variation of electric field will not always be as it is in case of point charge. It can vary from body to body, surface to surface, and of dipole to dipole. So electric field E in case of dipole is varying as cube of distance. तो यहाँ पे जितना आप दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कम होना होगा. जितना आप पॉइंट चार्ज में होगा वहां सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड varies as square of distance. This is due to point charge, this is due to dipole. And this was the question on the electric field on the axial line. Now we'll be discussing electric field due to this same dipole
on equatorial point. Say suppose this point P will be located now here.